वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि तथा नमस्कारं करोमि। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः चामुण्डा देवता अग्न्यासोक्तमात्रो बीजं दिग्बन्धदेवता तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुह्यं तमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं तुच्छृणुषु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निननदहामानस्तु शत्रुमदे गतोरणे विषमे दीर्घमे चैव वर्यातः शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चिदशुभमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासुरा ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाङ्ग्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साये महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। उदिच्यां पादु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी उदर्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवोरस्य यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुर्षोर्मध्ये श्रोत्रोयोद्धर्ववासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले दुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अद्रे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती।
दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूपरि स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलिश च नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिकां मेढ्रं गूदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नार्सिंगी च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलिसि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्तंशकराली च केशाञ्च चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांस न्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूर्णामणि तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्ममे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्मश्चैव रक्षेण नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यजिच्छेच्छुपात्मनः कवचेनावृत्तो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतपुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसिद्ध्यं सत्यान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रं मृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यदि विषम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेश्चराश्चैव जलजाशोपदेशिका सहजा कुल्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबलः ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोतिर्भवेद्राजस्तेजो विद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ श्रीदेव्याः कवचं सम्पूर्णम्।